and the special education for the children with disabilities. So these are the two ways to start the education. And what is inclusive education? When we studied a lot of definition. So I got this definition or the statement. I like it. So inclusive education is when all students, regardless of any challenges that may have, are placed in age appropriate that are in their own neighborhood schools to receive high quality instruction, intervention, and support that enable them to meet success in the core studies. The inclusive education is the process of strengthening the capacity of education system to reach out all types of the learners. With the inclusive education, who are not having any disability, both types of the students are included in the inclusive. All types of the learners are included. That is the inclusive. Restructuring the curricular policies, practices in schools so that they can respond to the diversity of the students in the locality. One of the definition from the UNESCO. So I did find that article, UNESCO article, outline many of the hello. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही वहां से। हाँ मैम, ये कह रहा हूँ कि आप वहां से खाली स्लाइड शेयर करिए और मैं फोन पे आप बात करिए, तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ, यहाँ से पहुंच जाएगा सबको। हाँ आप जी आप स्लाइड शेयर करिए वहां से और यहाँ से बोलते रहिए, मैं फोन पे जी फोन करता हूँ। बस थोड़े समय से रुकिए, थोड़ा समय, एक बार कनेक्शन, ये थोड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन का कि जब तक एक बार सेटिंग नहीं बैठती है तब तक जो है वो समस्या रहती है, या फिर इंटरनेट दोनों साइड में बराबर हो तब जा करके चलता है। मैम अगर सूटेबल हो तो मैं आपको फोन करूं और फोन पे आप ईयरफोन लगा करके और स्लाइड वहां से शेयर करते रहिए। स्लाइड भी स्टक हो गया है आपका। हेलो जी मैम, जी मैम आ रहे हैं सर आवाज? आप एकदम बढ़िया है। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। मैं भी परेशान हो गई थी कि आवाज क्यों नहीं आ रही है। आप एकदम बढ़िया आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्लाइड एक बार आप रिमूव होकर के वापस इससे करिए। जी 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 सर, ठीक है। So thank you, Dr. Santosh Yadav sir, for calling me this national conference organized by your college, Shri Shah KL Institute for the Deaf Trust Teachers Training College, Bhavnagar, and in a very genuine and the need of our. The topic is educational and pedagogical reforms in inclusive education. It's really the need of our, and this conference is very needed to all the stakeholders.
And today's my topic is reforms in teacher eligibility test and the recruitment. So before going to the reforms and the recruitment, so we studied some of the part that is just history of inclusive education. What is the history of inclusive education? So as per the various definition and as per the reading, I tell you that what is inclusive education? The inclusive education, we know the meaning of education. What is the meaning of inclusive? Inclusive means all the people, those who are having the disability, those who are not having the disability, they are come together and take the education. So as per my knowledge, all peoples, disabled as well as non-disabled, all come together, get the knowledge, spread the knowledge, sharing the ideas and develop a nation. That is become the inclusive education. And the inclusive education, it is a process of strengthening the capacity of the education system, reach out to all types of the learners. It involves restructuring the cultures, policies, practices in schools so that they can respond to the diversity of their locality. One of the UNESCO article included the inclusive education, means they including the social norms, often the bigger barrier to inclusion barrier as any factor that obstruct the capacity for third sector organization to implement evidence-based intervention. The facilitator often helps a group of people to understand what are the common objectives and how to assist them, how to plan them to achieve those objectives. So this picture shows the inclusive education means including all children in the quality learning. Means it has a right to all the children. They will take. Excuse me, ma'am. Yes. मैम अगर हेलो मैम आपकी पीपीटी एक ही है, थोड़ा उसको बदलते रहिए, उसको चेंज नहीं हो रही पीपीटी स्लाइड आपकी। और मैम आप बायलैंग्वेज करती तो ज्यादा बेटर होता हम लोगों के लिए। मैंने ओके बायलैंग्वेज तो कर लूंगी सर जी, पर पीपीटी तो मैं लैपटॉप से शेयर कर रही हूँ तो वो तो बदलती जा रही है मैम। मैं बोल रही हूँ मोबाइल में से। नहीं, हम लोगों के यहाँ शेयर नहीं हो रही मैम, एक ही फ्रंट पीपीटी आपकी है। ओके ओके सर, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके विजय भैया ला आवाज दे और 1 मिनट। ए भैया, आज क्या प्रॉब्लम भैया रानी पुलिस नहीं जोड़ता भैया, मम्मी आवाज दे दी तिला बोलो काय प्रॉब्लेम येते मला आज काय मोबाईल मधून कसं शेअर करतात ग? दे तुम शेअर केलेले पण ते नाही होत। हेलो सर, हेलो। यस मैम, यस मैम। यादव सर आप चेंज करते जाइए ना पीपीटी। अब मैम अगर आप शेयर करें मुझे
तो मैं शेअर तो किया ना सर आपको, शेअर कशी करता त्यांना व्हॉट्सअपला नाही तर मेलला पाठवून ते डेस्कटॉप होती ते डायरेक्ट. सर आप मुझे आपका ईमेल भेज दो, मैं अभी सेंड करती हूँ 2 मिनट्स में. हेलो मैं भेजता हूँ मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ मेल आई, या फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर दीजिए, मैं यहीं से मैंने लेता हूँ. ठीक है, मैं लीव करती हूँ सर, और उसके बाद में. हाँ मैम. हाँ कोई बनाइए. मैम हमने व्हाट्सएप किया है आपको, अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर करें तो ठीक रहेगा. हेलो. यस मैम मिल गया, मैं शेयर करता हूँ. हाँ पीपीटी जी जी मैं शेयर. स्क्रीन आप बंद शेयरिंग कर दीजिए अपने यहाँ से. लैपटॉप में से आउट हो जाओ फिर मैं. हाँ लैपटॉप में से आउट हो जाइए. ठीक. अभी दिख रहा है ना सबको? हाँ अभी दिख रहा होगा सबको. हाँ जी सर. जी मैम आगे चले. ओके ओके ठीक है सर. आगे चले. हाँ जी सर. हाँ आप बताते जाइएगा मैम. हाँ सर लीजिए आगे. और आगे आगे लीजिए सर, आगे लीजिए. या बस मैं अभी एक जस्ट जिस बता देती हूँ उसका. What is inclusive education? As we know, we are studied various definition, various books, and reading all the articles on the inclusive education. So inclusive education means when all the students, regardless of any challenges they may have, are placed in age-appropriate general education classes that are in their own neighborhood schools to receive high-quality instruction, interventions, and supports that enable them to meet success in the core curriculum. Now, the inclusive education, it is the process to strengthening the capacity of educational system to reach out all types of the learners. Now, when we studied the Millennium Goal 4, that is the sustainable development, and this millennium goal number 4, sustainable development, our country was adopted in 2015. And when we adopted this goal, for that to ensure the inclusive and equitable education and to promote lifelong learning opportunity for all types of the learners. Means shortly we can say that what inclusive education means,
everybody is included in the part of education, or everybody is a part of education, those who having the disability or those who are not having the disability. Next, sir. So this is the inclusive education. So including all children, all types of the learner. So this picture shows including all children in the quality learning. Means when we studied the right to education, every children have a right to get the quality learning. Every children have to get the quality learning. It's a right of each and every. And at our constitution states ki we can provide the free and compulsory education till 0 to 14 years, but the right to education is the right of all the children to get the quality education. Now, what is the current status of inclusive education? Report. The status of disability in India noted 30 million students or the 30 million children suffer the disability. And sixth All India Education Survey, that is the NCERT report, shows 20 million school, that is 6 to 14 year age, required a special education. The government of India and each state government, NGOs took the initiative for appropriate strategy for the special needs. And our constitution provision is free and compulsory education should be provided to all the children with complete the age of. Next, Lisa. So as per the Kothari Commission, when we studied the Kothari Commission 1964 and 66, the Kothari Commission addressed the issue of access and participation by all. It stressed a common school system open to all children, caste, creed, community, religion, economic condition, and the social status. And the National Education Policy 1968 adopted Kothari Commission recommendation and had suggested the expansion of education facilities for physically and mentally handicapped children and the development of an integrated program enabling handicapped children to study regular classes. The Kothari Commission focused attention on the education of children with disability, resulted in 1974 into the scheme of integrated education for disabled children, that is the IEDC. Next, NPE 1986 focused on the removal of disparities in education while also focusing on the specific needs of those who had been denied equality. Integrated Education Project was introduced by the NCERT in 1987 with financial support from the Ministry of Human Resource Development and UNICEF. The World Declaration on Education for All, which was adopted in 1990, gave further boost to integrated education in India. Rehabilitation Council of India 1992 initiated a training program for the development of professionals in response to the needs of students with disabilities. National Policy 1992 and the Program of Action was initiated, which helped push inclusive education. Then DPEP, the launch of District Primary Education Program, started in 1994, which provide the further impetus to the existing of the efforts. The enactment of the People with Disability Act 1995, also called Indian Disability Act, provided legislative support to inclusive education. Indian Disability Act makes it mandatory to provide free education to children with disabilities in an appropriate environment until the age of 18. In 1999, the government passed the National Trust for Welfare of the Person with Autism
Cerebral Palsy, Mental Retardation, Multiple Disability Act for the economic rehabilitation of people with disability. And now the current, that is the Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Ucha Shiksha Star Abhiyan, and the NEP 2020 focuses the policy for the inclusive education. So next one is ये slide जरा बाद में लेते हैं. First we go to the Teacher in National Education Policy 2020. Next slide. Next. नहीं पीछे नहीं सर, आगे. हाँ, next. Teacher in NEP 2020. Next. हाँ. So the Teacher in NEP 2020. Now, teaching is the heart, is the work of heart. एक टीचर्स के लिए टीचिंग करना एक एनर्जी होती है. विदाउट टीचिंग उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती, एज पर माई नॉलेज. बिकॉज आई एम अ टीचर, I want to become an energetic teacher, means my student, my work, my teaching learning process is my the energy. ये मेरा हार्ट है, राइट? और ये अगर काम करता है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट आ सकते हैं. वो डेवलपमेंट किस तरीके से लाना है? When we are in the era of National Policy of Education 2020, so we have a lot of knowledge and basically the technology based teaching. It is the need of our. In last 2 to 3 years, we are suffering the pandemic period. Now, in this pandemic period, previously we don't have the knowledge about the how to use technology for the students. So for online teaching learning process, some teachers have the knowledge, some teacher uses, some of the distance program use the technology, but those who are in the regular in teaching, रेगुलर प्रोग्राम, सो वो टीचर्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग करना एंड जो द स्पेशल नीड्स के जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए ऑनलाइन टीचिंग करना, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. बट we as a teacher, we think about our students and our student is our energy. So मेरे स्टूडेंट के लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए हर एक टीचर ने technology based teaching शुरू किया. Then they involved in the training, they get the training, they train with the technology and they started our work. So and we the National Kothari Commission, or we can say that the teacher are the giving the shape to the future of our children and therefore the future of our nation. It is because of this noblest role of the teacher. Society gave teachers or gurus what they needed to pass on their knowledge, their skills, their ethics towards the student. The quality of teacher education, recruitment, employment or deployment, service condition, and the empowerment of teacher is not where it should be. अगर हमको टीचर्स की क्वालिटी देखना है, रिक्रूटमेंट देखना है, एम्प्लॉयमेंट देखना है, सर्विस कंडीशन देखना है, एंड ये सारों के लिए मतलब इसके लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए एज अ पॉलिसी. बट व्हेन यू फुल्ली इन्वॉल्व इन योर प्रोफेशन, सो डेफिनेटली यू विल गेट द with the various innovation, you will get the various strategy how to overcome the students to the teaching learning process. आप ये फील्ड की और आपके स्टूडेंट किस तरीके से अट्रैक्ट होंगे, उसके लिए आपको क्या देना है स्टूडेंट को, ये हमने सोचना चाहिए. The teacher have the highest respect in the society, highest status in the teaching profession. So ये सब अगर हमको हाईएस्ट रिस्पेक्ट है, ये हमारा प्रोफेशन सबसे अलग है, सबसे हटके है, हमारा हाई स्टेटस है, तो इसके लिए हमें कुछ इथिक्स भी उसमें फॉलो करना पड़ते हैं. एंड दिस नॉट
टीचर्स ने ethics follow करना चाहिए, ऐसे नहीं, but it is to the carry forward to the students. When you carry forward the all knowledge, skill, attitude, ethics towards your students, so definitely they become attracted to this profession. And your duty is how to motivate, how to empower your students, right? So this is about the role of teacher in the National Education Policy 2020. Then what about the recruitment process? What about the recruitment process of the teacher as per the new policy? So first, to ensure that outstanding students enter in the teaching process, profession, then how the students are enter in your teaching profession, and specifically in the rural areas, because a large number of merit-based scholarships shall be instituted across the country of studying, qualifying the 4 years integrated teacher education programs. And the National Education Policy gives various importance to the ITEP, integrated teacher training programs. So it's a duty to the state to give the merit-based scholarship to all kinds of the learners. And in the rural areas, merit-based scholarship will be established that also include the preferential employment in their local areas upon successful completion of their B.Ed programs. Previously, जैसे आप अगर हमसे कहते हैं कि हमको स्कॉलरशिप मिलता था, जो B.Ed करता है उसको स्पेशल स्कॉलरशिप मिलता था, हमारे टीचर बोलते हैं हमको ऐसा. Now that ट्रेंड फिर से आना चाहिए. उसी के सिवाय हम एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए रिक्रूटमेंट की, अभी ऐसा हो गया कि 2 साल का हो गया, 4 साल का नहीं मैडम इतना बढ़ गया तो स्टूडेंट नहीं आएंगे, स्टूडेंट जरूर आएंगे. It's a responsibility of teacher to give the various reforms. New reforms means the new innovations, new strategies, new teaching learning process, use the technology for the teaching, use various scholarships, and the scholarship state should be provided the various scholarship for the student, and such scholarships will provide the local job opportunity to the local students, and especially for the female teachers, because many of the female teachers are included in this profession. So the local, the students in the local area, they have been made the role model. कि आप इस तरीके से आपका रोल तैयार करो कि students are coming to this profession. Incentives will be provided for the teachers also when they are taking up the teaching job in the rural areas. Especially in the areas that are currently facing acute shortage of the quality teachers. A key initiative for teaching in rural schools will be provision of local housing near or the school premises or increase housing allowances. अगर वो स्कूल के पास रहेगा, स्कूल के पास उसको घर मिलेगा, तो definitely he or she will look more concentrated on their students. Then transparency in the transfers. The harmful practice of excessive teacher transfers will be so that the student have continuity in their role models and the educational environments. Transfers will occur in very special circumstances. Transfers will be conducted through an online computerized system that ensures the transparency. अगर कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी उसमें दिखाई देगी. देन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. So teacher eligibility test will be strengthened to inculcate better test material, both in terms of the content and the pedagogy. The TETs will also give extended to cover teachers across all the stages, in the foundational stages, preparatory stage, middle school stage, secondary school stage. Means all these are the levels of the school education: foundational, preparatory, middle, and the secondary. For subject teachers,
suitable TET और NTM, the National Testing Agency, क्योंकि अभी ये जो टेस्ट होते हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा हो जाते हैं. So NTA test scores in corresponding subjects will also be taken into account for the recruitment. The passion and the motivation for teaching, a classroom demonstration or interview will become integral part of the teacher hiring at school and the school complexes. These interview also be used to assess comfort and the proficiency in teaching in the local language, so that every school or the school complexes at least some teachers who can converse with students in the local languages and other prevalent home languages of the students. Teachers in private school also must have qualified similarly through the TET, a demonstration, an interview, and the knowledge of local language. Means the preference of the local language is always important, because without of the local language, the teacher, हम बोलते हैं ना कि student के हृदय तक नहीं जा सकता जब तक उसको local language नहीं आता है. आपका professional language, बट आपकी भाषा से अगर स्टूडेंट का हृदय आप जब तक नहीं जीतते तब आपका नॉलेज, आपका शेयरिंग जो है वो उसका क्या बोलेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ता. इसीलिए हमारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में अगर हम उनसे बात करें तो इट विल बी ग्रेटफुल टू यू, नॉट द स्टूडेंट बट टू यू, कि मैंने वो लोकल लैंग्वेज सीखी और वो स्टूडेंट से मैंने बात की, देन दे आर absolutely motivated to this profession. Then appointment of adequate number of the teacher across the subject, especially the art subject or physical education, occasional education, and the language teachers. So the अभी हम ओवरऑल अगर हमने पढ़ाई किया तो ऐसे लगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाकी है, not in Maharashtra but all the state in country, our country, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं होता है जल्दी से, और जो होता है वो बहुत कम पर्सन में होता है. तो इसीलिए रिक्रूटमेंट अगर एडिक्वेट नंबर में अपॉइंटमेंट हो जाता है, स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड द लैंग्वेज टीचर्स, सो रिक्रूटमेंट होने के बाद वो स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट के टीचर्स मिलते हैं, एंड देन द सब्जेक्ट विल बी लिफ्ट अप. तो टीचर कुड बी रिक्रूटेड for a school or the school complex, and sharing of the teachers across school should be considered in accordance with the grouping of schools adopted by the state government. School complex का मतलब है कि बहुत सारे schools एक साथ जब चलते हैं ना, तो जैसे कोई specific teacher होता है, या हम बोलते हैं कि वो teacher बहुत अच्छा पढ़ाता है, या जैसे अब हम देखें कि global teacher रंजित दिसले, right? तो हर कोई उनको बुलाना चाहता है कि उनके पास क्या knowledge है, उनके पास क्या sharing. तो ऐसे teachers को भी हम उस schools complex में थोड़ी टाइम के लिए बुला सकते हैं, right? Then school complex, school or school complex will be encouraged to hire local eminent persons, experts at the master instructions in various subjects such as traditional local arts, occasional craft, entrepreneurship, agriculture, or any other subject where local expertise exists to benefit students and help preserve and promote local knowledge and profession. For example, जब हम देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज जब हम जाते हैं तो ट्राइबल एरियाज का एक स्पेसिफिक उनका आर्ट होता है, एक स्पेसिफिक उनका कल्चर होता है. अगर वो कल्चर से हमको, जैसे अभी पेंटिंग्स वगैरह है, तो आदिवासी लोगों की आप जब पेंटिंग्स देखेंगे तो वो बढ़िया पेंटिंग होती है, लेकिन अगर ऐसे लोगों को हमने स्कूल में इन्वॉल्व किया और उनसे हमने अगर ट्रेनिंग ली, तो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर द स्टूडेंट्स. दे आर द एंटरप्रेन्योर्स, राइट? वो एक एंटरप्रेन्योरशिप हम उनमें इनकलकेट करेंगे, और कल को जाके उनकी ही कला का सम्मान अगर बढ़ाएंगे तो वो उनका व्यवसाय उसी तरीके से अच्छे से व्यवसाय कर सकते हैं. पढ़ाई का मतलब ऐसा ही नहीं कि आप एक करो, बीएड डीएड करो और फिर स्कूल में टीचर बने. इट इज नॉट. द एंटरप्रेन्योरशिप का इनकलकेट होना जरूरी है. देन टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर, टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचर. A technology-based comprehensive teacher requirement planning forecasting exercise will be conducted by each state
to assess expected subject-wise teacher vacancies. मतलब जो टीचर के पास टेक्नोलॉजी है और जो लर्न करना चाहते लगे, वो जो ट्रेन होना चाहते हैं, तो ऐसे टीचर्स को हमने प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी है. In recruitment and the employment will be scaled as needed the time to fill all the vacancies of the teachers, including local teachers, with suitable incentives. उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स हमने देना चाहिए फॉर द करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन. Teacher education programs and offering will also be the vacancy thus projected. Next one. Service environment. The primary goal of the service environment and the culture of the school will be to maximize the ability of teachers to do their job effectively and to ensure that they are the part of vibrant, caring and inclusive communities of teachers, students, parents, principals and other supportive staff, all of whom share a common goal to ensure that our children are learning. Next one is the decent and the pleasant service condition at our school. The first requirement in this direction will be to ensure the decent and pleasant service condition at school. Adequate and safe infrastructure, including toilets, clean drinking water, clean and attractive spaces, electricity, computing devices, internet, libraries, and sports, and the recreational resources will be provided to all the school to ensure the student and the teacher and children with disabilities receive a safe, inclusive, and effective learning environment, and inspired to teach and learn in their schools. In service training, we'll have inputs on safety, healthy, and environment at workshop in school to ensure that all the teachers are sensitized to these requirements. Innovative formats. The government may adopt innovative formats, means such as the school complexes, rationalization of the schools, effective school governance, resource sharing, community building. These are the new informative formats. The creation of school complexes. Why we create the school complexes? So the creation of the school complexes could go a long way towards building vibrant teacher community. The hiring of teachers to school complexes automatically create relationship among school across the school complex. स्कूल कॉम्प्लेक्स में अगर हम इसका एम ही है कि हमको एक वाइब्रेंट टीचर कम्युनिटी उसमें क्रिएट करना है. सो व्हाई वी क्रिएट द वाइब्रेंट टीचर कम्युनिटीज? बिकॉज देयर वाइब्रेंट टीचर नॉलेज, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर्स, ये हमको उसमें करना है. टीचर्स एट स्मॉल स्कूल्स will not remain isolated many times, but उनके लिए अगर हम स्कूल कॉम्प्लेक्स में अगर जगह जगह देते हैं तो it will be good for that small schools. So sharing the best practices with each other in school complexes and working collaborations. So 2 or 3 schools come together and they work
collaboratively. Means for what? For example, previously when one of the articles, Dr. Baba Sahib's article, when he was giving the suggestion for the University of Mumbai. So in that time, it's a very long period. Community colleges or the community teachers means, suppose one history subject in for all schools, right? The school subjects are all over, but very specific subject, those teachers are very good in that subject. So we should invite that teachers in each and every schools. Why? Because the teacher are interacting with the other school teachers and they form a good creation of the work and group good discussion of the various topics, and to provide this a conducive environment to the students and give the best practices for each and every school. Then positive learning environment. When we create the positive learning environment or effective learning environment, so will definitely our students get involved in that culture, and definitely they will train and learn good knowledge, skills, and the various strategies for the teaching used in the teaching learning process. The collaboration with parents and other key stakeholders of the society. Teachers will also be more involved in the governance of schools, including members of the school management, school complexes, school management committee होती है ना स्कूल में, so उसका member भी आप उसमें बन सकते हैं. Then teachers autonomy or a positive learning environment. We help to ensure that the schools have a positive learning environment. The role of expectation of the principal and the teachers will explicitly include developing a caring and inclusive culture at their schools for effective learning and benefit for all the stakeholders of the society. Teachers' autonomy. Teachers will be given more autonomy in choosing aspect of pedagogy, so that they teach in the manner they find most effective for the students in the classroom. Teacher will also focus on socio-emotional learning, a critical aspect of the students' holistic development. Teachers will be recognized for novel approaches to teaching that improving learning outcomes in their classroom. Next, continuous professional development. Next, KG sir. Continuous professional development. Teacher will be given continuous opportunity of self-improvement and then to learn at least innovation and advances in their professions. टीचर का खुद का डेवलपमेंट होने के लिए, खुद में इम्प्रूवमेंट होने के लिए उसको इस तरीके का प्रोग्राम देना बहुत जरूरी है. जैसे स्टूडेंट के लिए हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लेकर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है. अगर उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली इट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट, ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. सो इसीलिए टीचर का कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है. एंड द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी विल कवर लेटेस्ट पेडागॉजीज. लेटेस्ट पेडागॉजीज क्या आई है इस पे हमने देखना है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एटलीस्ट 50 आवर्स ये सीपीडी के लिए पर ईयर 50 आवर्स टीचर्स ने देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम उसमें कर सके. लेटेस्ट पेडागॉजीज मींस देयर इज अ फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, फॉर्मेटिव एंड एडॉप्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग,
arts integrated, sports integrated, storytelling approaches, field-based experience. These are the latest pedagogies. जैसे हमने देखा है कि national education policy they stress upon the experiential learning and the field-based working. Why? When we give the experience to the community experience to our students, so definitely they will increase their strategies, they will increase their knowledge, and they will form the needs of the society. Then career management and progression of the teachers. Teachers doing outstanding work must be recognized and promoted, and given salary rises to incentives to all the teachers to do their best work. जो best काम करता है उसके लिए उसको special incentives उसके लिए मिलना जरूरी है. टीचर के लिए भी रिसर्च में थोड़ा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम देना चाहिए. कुछ इंसेंटिव उसमें उनके लिए रखने, जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन रिसर्च के लिए हर ZP मुझे पता नहीं अदर स्टेट में क्या है, लेकिन इन महाराष्ट्र में एवरी जिला परिषद स्कूल फॉर एवरी टीचर्स गिव द फंड फॉर द एक्शन डूइंग एक्शन रिसर्च. सो ये एक बात उसने दी. करियर ग्रोथ होने के लिए उनके लिए वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है. Then vertical mobility of teachers based on merit will also be the paramount. National professional standard for the teachers. अभी आया है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स. करियर ग्रोथ के लिए उनके टेन्योर, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज होना चाहिए. जो स्कूल में स्टेज दिए टीचर्स के प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी, जैसे जैसे वो स्टेज पर जाएगा उसके लिए उसको स्पेशल इंक्रीमेंट, स्पेशल प्रमोशन जैसे फॉर करियर एडवांस स्कीम्स थ्रू के द्वारा उसको देना चाहिए. Then vertical mobility of teacher, it is based on merit. Outstanding teacher with demonstrated leadership and management skills would be trained over time to take an academic leadership position in the school or the school complexes. जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे स्कूल्स में डायरेक्टर्स आते हैं, स्पेशल सुपरवाइजर क्रिएट किए जाते हैं. उसी तरीके से स्कूल कॉम्प्लेक्सेस मींस BRCs है, डाइट्स है, SCRTs है. तो इसमें इस तरीके के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेटर्स. Yeah, professional. Just 1 minute. National professional standard for the teachers. So a common guiding set of national professional standard of teachers. ये अभी डेवलप हो चुका है. लास्ट ईयर मैंने इस पे एक स्पीच दिया था. And this professional standard setting body under the General Education Council in consultation with the NCRTs and the SCRTs. So teachers from across all the levels and the regions, expert organization in teacher preparation and development, expert bodies in vocational education and higher education institution, the standard would cover expectation of the role of teacher at different level of expertise and the competencies required for the stage. It will also comprise standards of performance appraisal for each stage that would be carried out of the periodic basis. जैसे हमारे हायर एजुकेशन में होता है ना क्या, करियर एडवांसमेंट स्कीम, उसमें जैसे स्टेजेस होते हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, वैसे स्कूल में भी ये स्टेजेस आना जरूरी है. मतलब जैसे जैसे उनका स्टेज बढ़ेगा, उनके प्रोग्राम्स बढ़ेंगे, उनके इंसेंटिव्स भी उसमें बढ़ेंगे. तो इस तरीके से उनको प्रमोशन देना चाहिए. तो 2030 तक का ये मामला है कि 2030 तक ये सब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स आना जरूरी है. Now for the special educators, so there is a urgent need for additional special educators for certain areas of the school. Some examples of such specialist recruitment include subject teaching for children with disabilities or Divyang children at the middle and secondary school level, including teaching for specific learning disabilities. Such teachers would require not only subject teaching knowledge and understand of subject related aims of education, but also relevant skill of understanding of the special recruitments of the children.
उसके लिए उसको ट्रेनिंग इन हाई क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज पेडागॉजी. Student, as per the student, so teacher should be having the some kind of the training. So government should provided the training in the quality content as well as the pedagogy for the teachers. Then minimum degree qualification इसमें बढ़ चुका है, that is the integrated teacher education program, that is the 4 years teacher education program, इसीलिए ही आया है. And then outstanding जैसे हम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में देखते हैं तो उसके लिए बीएड एमएड इंटीग्रेटेड पीएचडी डिग्रीज इसमें एजुकेशन में आना बहुत जरूरी है. Then practice of fundamental duties of the Indian Constitution along with the other constitutional provisions. जो provision हमको मिला है तो उस वो provision के लिए specific है. Then shorter post of B.Ed certification courses. So when the teachers is appointed and some training is required, so sometimes we can create some shorter B.Ed certification courses. जैसे हम टेक्नोलॉजी हमको आता नहीं है तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल बेसिस के जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं उस तरीके से हम सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं एंड वी इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. सो सेम थिंग व्हेन वी स्टार्टेड सम post B.Ed certification courses, so definitely our teaching learning skills or teaching skills हम इसमें improvement हो जाएगा. Then pedagogical approach में बढ़ावा इसमें आना चाहिए. Then national curriculum framework for the teacher education. So these are the reforms in the teacher inclusive education and specifically for the TET test. अब हम जाएंगे कि सर एकदम पहला स्लाइड लीजिए. रेगुलेशन हाँ, एनसीटी नोटिफिकेशन अगस्त 23 इसके हाँ राइट. एनसीटी नोटिफिकेशन अगस्त 23 2010. एनसीटी ने कुछ नोटिफिकेशन निकाले थे टीईटी के लिए. तो मैं वो जो नोटिफिकेशन है ये गैजेट में देते हैं. बस जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ. क्लासेस 1 to 5th के लिए और 5th और दूसरा जो कैटेगरी है वो 6 to 8th स्टैंडर्ड के लिए है. सो क्लासेस 1 to 4 के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? सो सीनियर सेकेंडरी with at least 50% mark and 2-year diploma in elementary education, or senior secondary with at least 45% marks and 2-year diploma in elementary education. Or senior secondary at least 50% marks and 2 years diploma in education and diploma in education with special education. These are the minimum qualifications. With this, second one is the pass of TET to be conducted by appropriate government in accordance with the guideline framed by the NCTE for this purpose. Then class 6 to 8 तक के लिए you have the bachelor degree, that is BA BSc and 2 years diploma in elementary education, or BA BSc with at least 50% marks and 1 year bachelor in education program, or BA BSc BA or BSc with at least 45% marks and 1 year bachelor in education in accordance with the NCTE regulation time to time. Then secondary senior secondary at least 50% marks and 4 years bachelor of elementary education. Senior secondary at least 50% marks and 4 years integrated teacher education program, that is BA BEd or BSc BEd or BCom BEd, or BSc BEd with BA BSc with 50% marks and 1 year BEd with special education.
So these are the minimum qualification. So these are the minimum qualification directed by the NCT. आगे का स्लाइड है ना, एग्जाम पैटर्न लेंगे, एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट हाँ यस, टीईटी का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, पहले एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था। नाउ अभी जो है, अभी महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद ये एग्जाम कंडक्ट करती, वैसे ही जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी होगी एज पर द स्टेट जिसको वो काम किया होगा, या एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा भी ये काम होता है। तो ये टीईटी का एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट होता है, इसमें दो प्रकार के पेपर्स होते हैं, एक पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। तो पेपर नंबर 1 जो होता है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, ये एग्जामिनेशन इट इज ऑफलाइन एग्जामिनेशन, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तीसरा है ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप इन नेचर। उसमें 5 सेक्शन होते हैं। टोटल एग्जामिनेशन विल बी 150 क्वेश्चंस in paper that are child development and pedagogy, language 1, language 2, mathematics and environmental studies. Each subject will have contain 30 question. ये जो 5 सब्जेक्ट इसमें दिए गए, हर सब्जेक्ट पर 30 मार्क के सवाल होते हैं। 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का होता है। एंड आफ्टर द क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन दे विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर प्रीवियस स्लाइड पे बताना एग्जाम पैटर्न। हाँ, सो दिस इज द पैटर्न। सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। Language 1, 30 questions, 30 marks. Language 2, 30 questions, 30 marks. Mathematics, 30 questions, 30 marks. Environmental studies, 30 questions, 30 marks. इस तरीके से 150 मार्क्स का एग्जाम होता है पेपर 1 का। Those who are 1 to 5 standard, 1 to 5th standard. Next. इसका पैटर्न पेपर में ये भी 150 मार्क्स का होता है टोटल। इसमें भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, mathematics and science for maths and science teachers, those who are having the method maths and science teacher, and social studies, social science for social science. So each will have the 30 questions, 30 marks, and time limit is 90 duration. So this is about the paper pattern of the TET examination. सर ने अभी एकदम लास्ट जाइए, थोड़ा बस हो तो गया मेरा। एक लास्ट का इसका फायदा क्या होगा? थैंक यू। ये जो 2 स्लाइड्स मैंने इसीलिए डाला है कि अगर हम बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसीलिए क्यों करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि एक वो जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको एक फैमिली मिलता है, उनका फ्रेंडशिप होता है, इंक्रीज इन द एकेडमिक स्किल, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है एंड टुगेदरनेस उनमें आता है। एंड द नॉर्मल स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है इंक्लूसिव स्टूडेंट के साथ रहने से, या डिसेबल स्टूडेंट के साथ रहने से? दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन, दे विल डू देयर रोल एज अ पीयर ट्यूटर, व्हाट इज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अ सोशल बडी, ये रोल उनको फील होता है, एंड द चांस टू लर्न द ह्यूमन सर्विसेज। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द नॉर्मल स्टूडेंट्स, दोज हु आर इन द ग्रुप ऑफ डिसेबल स्टूडेंट्स, इसके लिए ये बेनिफिट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। अभी ओपन सेशन रखते हैं, किसी के कोई डाउट्स हैं
रिक्रूटमेंट प्रोसेस से या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से, तो प्लीज वो पूछें। हेलो, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? आवाज मेरी आ रही है? अपने प्लीज माइक को म्यूट करिए और कुछ डिस्कशन के लिए कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, किसी कोई प्रश्न है तो पुटअप करिए प्लीज। स्टूडेंट, पार्टिसिपेंट्स, कोई भी। मुद्दे पे मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैम? हेलो जी मैम, आवाज मेरी आ रही है ना? जी सर जी। हाँ मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछता हूँ, जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में। हाँ, किसी ने पूछा है मैम, क्यों ना सभी राज्यों को टीटी को बंद करके पूरे इंडिया में केवल सीटेट का ही एग्जाम करवाया जाए, ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न किसने पूछा है? नहीं, प्रश्न किसी ने भी पूछा हो, लेकिन कमल मंडा, हाँ। कमल मंडा जी का प्रश्न है कि क्यों ना सभी राज्यों को टीटी बंद करके पूरे इंडिया में केवल सीटेट का ही एग्जाम करवाया जाए। हाँ, तो मतलब क्या उनका नुकसान हो सकता है? हाँ, उनका कहना ऐसे कि जैसे सेट नेट होता है उसी तरीके से सीटीईटी का एग्जाम होना चाहिए, राइट? जी जी जी। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेगी तो वही जान सकते हैं, हम लोग तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? ये हमारे हाथ में तो है नहीं। राइट 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 इट्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि उनको क्या करना चाहिए, राइट। बट हम सुझाव जरूर दे सकते हैं बिल्कुल कि ऐसा जी डिमांड जी है। तो हम ये आपका ये कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें आप ये एक सुझाव जरूर भेज सकते हैं गवर्नमेंट को। जी 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 राइट। मैम, इसी से संबंधित जो कमल जी ने प्रश्न किया, कमल जी का जो सुझाव उन्होंने हालांकि सुझाव ही दिया है, मेरा भी ऐसा ही मानना, ऐसा सुझाव है कि जैसे जनरल एजुकेशन में एनसीटी का एक उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का उन्होंने नॉर्म्स बनाया हुआ है, और एनपीएसटी का भी उन्होंने एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया हुआ है, नेशनल प्रोफेशनल फ्रेमवर्क का। तो ऐसे हम क्या स्पेशल एजुकेशन में कुछ ऐसा नॉर्म्स नहीं क्रिएट करवा सकते हैं? या फिर दो बातें हैं, एक तो जनरल एजुकेशन के नॉर्म्स और स्पेशल एजुकेशन के नॉर्म्स दोनों अभी एक ही से जैसा चल रहा है। जो जनरल एजुकेशन के नॉर्म्स है एनसीटी ने जो बनाया हुआ है वही स्पेशल एजुकेशन में क्रिएट हो रहा है, वही सब उसको लिया जा रहा है जी। और स्पेशल एजुकेशन में उसकी डिमांड्स थोड़ी अलग है। जी। जैसे उनकी टीचर की रिक्रूटमेंट में अलग अलग हमारे डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए अलग अलग चीजें जरूरत होती है। हालांकि नो डाउट कि उनको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उनको चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट का उनको नॉलेज होना चाहिए, सीडीपी का, और उनको नॉलेज होना चाहिए बाकी की चीजें जो सब्जेक्ट्स है वो जानकारी होनी चाहिए। स्पेशल फील्ड में जैसे अगर अब देखा जाए तो अभी हाल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें 90 क्वेश्चंस तो दिए जा रहे हैं, और एक मात्र सीडीपी में एक इंक्लूसिव एजुकेशन का करके 4 से 5 प्रश्न आते हैं, हार्डली 6-7 प्रश्न आते हैं। तो अब उसमें दायरा बहुत बड़ा है, दायरा में इंक्लूसिव एजुकेशन का भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट के प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट होता है जैसे हिंदी हो गया और मैथ हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, प्राथमिक लेवल पे उसमें भी 2-3 प्रश्न ही डाले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो एक एक्चुअल में जो जरूरत है स्पेशल एजुकेशन में टीचर्स की, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और वो टीचरों को नहीं जान पा रहे हैं। हालांकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो डीएसएस भी रिक्रूटमेंट करा रही है दिल्ली गवर्नमेंट,
तो वहां पे वो स्पेशल एजुकेशन के अलग से उनकी वैकेंसी निकालती है और उनके अलग से रिक्रूटमेंट करती है, उनका क्वेश्चन अलग से निकालती है जी। तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन की भर्ती के लिए उनमें अगर उनके टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी है उनके लिए अलग से पेपर पैटर्न बनाया जाए और जो जनरल एजुकेशन का हो रहा है उनके लिए अलग से पैटर्न बनाया जाए? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है? ऐसा तो होना चाहिए सर, क्योंकि जैसा या फिर उसमें एक पेपर, हम एक जनरल एजुकेशन का एक पेपर और उसमें अगर एक स्पेशलाइजेशन का एक पेपर रखते हैं तो इट विल बी गुड, कि मतलब उसको जनरल एजुकेशन के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो उसमें से उसको दिखाई देगा और वो उसका पॉइंट्स तो मिल सकते हैं। जी जी, मीन्स ऑप्शनल के रखें कि आपको जनरल एजुकेशन के करने हैं या स्पेशल एजुकेशन के करने हैं। यस यस, तो एक जनरल एजुकेशन का पेपर जो सभी के लिए होता है, जो Correct. सभी के लिए होता है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, GDP. लेकिन उसके साथ प्लस अगर जो उसको स्पेशल एजुकेशन है तो उनके लिए वो स्पेशल एजुकेशन का पेपर उसमें होना जरूरी है। जी जी, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो तो कंपलसरी सबके लिए है। कंपलसरी है। उसके बाद जैसे हम ईवीएस का देते हैं और मैथ्स जी। का, साइंस का देते हैं, तो उसकी जगह पे एक ऐसा दिया जाए कि स्पेशल एजुकेशन की अगर ऑप्शन है तो स्पेशल एजुकेशन में अगर किसी को जाना है तो उसको ऑप्ट करे। वो हाँ, एक तो उसमें ऑप्शन दिया जाए या उसका एक स्पेशल पेपर उसमें इंक्लूड किया जाए। नहीं, राइट, ये सुझाव जो है वो किया जा सकता है। तो ऐसे स्पेशल एजुकेशन के जो कॉम्पिटेंसी है वो ली जा सकती है कि वो स्पेशल ली जा में सकती है। उनके अंदर में वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, वो जाना जा सकता है। बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो फिर बेसिक वो तो एप्टीट्यूड उसमें कितना इंटरेस्ट है ये नहीं समझ पाएंगे हम। जी 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 जी, थैंक यू मैम। और अगर किसी को कोई प्रश्न है वो अगर चर्चा करना चाहते हैं तो कहें, बातें करना चाहते हैं तो। हाँ मैडम, जो टेट का जो सर्टिफिकेट्स है उसकी मैडम वैलिडिटी कितनी होती है? सर उसका वैलिडिटी तो लॉन्ग लाइफ है। माने हर साल हमको देना पड़ेगा? नहीं, हर साल तो नहीं देनी है। ठीक है। अभी हाल में ही पिछले 6 महीने में एक सर्कुलर आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि अभी जितनी भी टेट है वो टेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए होंगे। उन्होंने सीटेट को लाइफ टाइम किया था, उसके बाद स्टेट ने भी, सभी ने यह उसको लाइफ टाइम कर दिया कि एक बार अगर किसी ने राज्य का कोई टेट दिया हुआ या सीटेट दिया हुआ तो उसको लाइफ टाइम होगा जी, तो आपका लाइफ टाइम ही रहेगा। और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने भी उसको कंपलसरी कर दिया है कि ये जो है वो रूल बना है वो सबके लिए है जी। आपको एक ही बार टेट देना है, बार बार नहीं देना है। बार बार जैसा सेट नेट देता है उसी तरीके से टेट देना है। हेलो, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हेलो मैम, स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आएंगी तो कब तक? मैम स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी कब तक आएंगी? ये तो देखो ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कब निकालता है तो ये तो सारा गवर्नमेंट का काम है कब निकालता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में पहले शिक्षण पोर्टल एक था, जैसे आपका क्वालिफिकेशन होता है, टेट पास होता है, आपका वो पोर्टल पे इंफॉर्मेशन आती थी, वो आपको फिलअप करना पड़ता था और उसके बाद में आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया होता था। अभी फिलहाल में वो पोर्टल बंद है, तो ऑल ओवर इंडिया पता नहीं है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट का इसमें अलग अलग दिशाएं हो सकती है। हेलो मैम, हेलो जी मैम, ऐसे बोल रहा हूँ। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम, जैसे अदर स्टेट में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी मिलती है तो निकलती है, तो हम अपनी स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट में जाते हैं तो रिजर्वेशन कोटा वो मिल जाएगा या फिर जनरल में क्रॉस होंगे? जनरल नहीं, में ओपन में आ सर, ओपन में आ जाता है फिर वो, ओपन में आ जाता है। हाँ। और मैम अभी मान लो ये सीआरई का चलता है, किसी के पास पैसे नहीं हो तो ये सीआरई का करना जरूरी है क्या 5 साल में 100 पॉइंट जैसे नहीं कर पाए बाय द वे तो? अभी ये प्रश्न मैम का नहीं है, प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैम इसके लिए एक्सपर्ट नहीं है, ये प्रश्न आपको मुझसे करना चाहिए। हाँ, तो इस पे हम चर्चा करेंगे अभी आपके लिए। सीआरई से रिलेटेड प्रश्न आप मुझसे पूछिए, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाला है। हाँ सर, मैंने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाला है अभी। क्या डाला है बोल दीजिए इसे यार। मैम एक तो हमें स्पेशल एजुकेशन वाले हैं जो हमें स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग, वो हमें सामान्य बच्चों को पढ़ाने के अलाउ नहीं करती है। हम स्पेशल वालों को पढ़ा सकते हैं लेकिन सामान्य को पढ़ा नहीं सकते। ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उचित है मैम? हेलो
हाँ, इनका कहना है मैम कि जैसे जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, और उनको गवर्नमेंट का कहना है कि आप जो भी अपने ट्रेनिंग दी हुई है वो स्पेशल की ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप खाली स्पेशल बच्चों को ट्रीट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। आप जो सामान्य बच्चे हैं, जो नॉन डिसेबल बच्चे, आप उनको नहीं पढ़ाएंगे। मेन स्ट्रीम स्कूल में तो ऑलमोस्ट बच्चे नॉन डिसेबल ही होते हैं। जी जी जी। आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते, आप उनको टीच नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है। तो क्या ये इनका कहना है, ये पूछना है कि हम अगर हमने भी वही सेम ट्रेनिंग ली हुई है, हमने भी सब कुछ वही पढ़ा हुआ है और हम वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं जनरल जो नॉन डिसेबल बच्चे उनको पढ़ाने को क्यों नहीं मिल रहा है? उनका ये प्रश्न है। ये तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी इस पर, क्योंकि रूल तो वही बनाती है कि कैसे रिक्रूट किया जाए, है ना? राइट। जबकि हमारी तो तैयारी है जी पढ़ाने की। हाँ, नहीं सही है कि हमने पूरी तैयारी करी हुई है। अब वहां पे वो इसलिए है कि आपको स्पेशली उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मिल रहा है। कमल जी, उसमें जो मेन मुद्दा ये है कि जो मेन कॉन्सेप्ट उसका ये है कि आपको स्पेशली उनको पढ़ाने के लिए मिला हुआ, तो आपसे अगर और काम कराएंगे, आपको और अगर असाइन कर दिया गया, टास्क दे दिया गया, तो आपके लिए आपको जो काम दिया गया वो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो मतलब आपका जो ध्येय उद्देश्य बना है, जिसके लिए आपकी रिक्रूटमेंट है, वो नहीं होगा। इसलिए उसका मेन यही होगा। अगर आप फ्री हैं तो आप जनरल एजुकेशन में नॉन डिसेबल बच्चों को पढ़ाइए, कौन मना कर रहा है? पढ़ाने के लिए मिलेगा ही आपको। अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते तो मिलेगा, गवर्नमेंट उसमें ना नहीं करेगी। गवर्नमेंट को तो लगता है एक्स्ट्रा काम वाले करने वाले। नहीं सर, करती है ना सर, करते हैं ना। राजस्थान सरकार में अलाउ नहीं करती। हमने हाई कोर्ट में केस भी लगाया था, लेकिन हम केस हार गए। गवर्नमेंट बोली कि आप सामान्य को पढ़ा ही नहीं सकते, यदि पढ़ाना तो आप विशेष बच्चों को पढ़ाओ, नहीं आप घर पे रहो, हमें सामान्य को आप नहीं पढ़ा देंगे, ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला। कमल जी, आपका प्रश्न अलग तरीके का है। यहाँ पे दो चीजें एक साथ में आकर के मिक्स हो रही हैं। पहली बात तो इसमें दो बातें, आप रिक्रूटमेंट होने से पहले की और एक रिक्रूटमेंट होने की बाद की। रिक्रूटमेंट होने से पहले में अगर आप बात करना चाहेंगे कि आप ये फाइट करना चाहेंगे कि हम ऐसा हमारे जब अगर हम एक ही टेट दे रहे हैं तो हम हमारी वैकेंसी हमारा रिक्रूटमेंट कहीं भी हो जाए। आपका पहला मुद्दा ये है कि जैसे सभी एक आम भर्ती निकलती, उसी आम भर्ती में हम भी हो जाएं, तो हम चाहे स्पेशल में चले जाएं चाहे जनरल में, चाहे हमारे लिए दोनों ऑप्शन है। जबकि राजस्थान गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि नहीं, आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको स्पेशल में जाना है या आपको जनरल में जाना है। राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन का कोई कोर्स करा हुआ है तो आप बस मात्र स्पेशल एजुकेशन में जाओगे, उन्होंने आपको बाध्य कर दिया है। एक बात तो हो गई रिक्रूटमेंट से पहले की बात। एक रिक्रूटमेंट की बाद की बात है जो हम अभी चर्चा करें, तो रिक्रूटमेंट की बात की कर रहे थे। रिक्रूटमेंट अगर आपका हो चुका है, उसमें आप स्पेशल बच्चे को आपको असाइन किया गया स्पेशल बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आप वही करेंगे। अगर आपकी जरूरत है, आप अगर काम करना चाहते हो नॉन डिसेबल वाले बच्चों के साथ में, तो आप वहां कर सकते हो। यहाँ दो बातें। पहली बात में उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि हम एक आम की तरह, एक सामान्य की तरह हम ट्रीट हो, हमें खाली स्पेशल की तरह ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि हमने सभी प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई है नॉन डिसेबल और डिसेबल दोनों को पढ़ाने के लिए। तो वो एक काम अभी है, वो काम करना है, वो रिक्रूटमेंट के पहले की बात है। उस